Welcome again, my dear friends. Today we will talk about another topic, that is the density of a cubic unit cell. How can we find the density of a cubic unit cell? We know density जो है, density of a unit cell, density of a unit cell is equal to mass of that unit cell divided by the volume of unit cell. It means अगर आपको डेंसिटी यूनिट सेल की निकालनी है तो आपको मास ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए. Then you can find the density of a unit cell. Now we are going to find an expression which we can use to find the density of a unit cell. Now suppose, let's keep this equation as number 1. Suppose एज लेंथ जो है, हमारे पास एक क्रिस्टल है, a unit cell है, that is this. Suppose the edge length is taken as A, it's taken as A, then what is the volume of this unit cell? So volume will be equal to A cube, because length into breadth into height. Since the unit cell is cubic, so all sides will be equal, hence volume will be equal to A cube. So volume of unit cell is equal to A cube, and now we are going to find the mass of unit cell. If mass of one atom is equal to m, if mass of one atom is equal to m, and suppose there are z atoms, for z atoms मतलब उस यूनिट्स, अगर एक एटम का मास m है, हमें नहीं पता कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं. लेट्स कंसिडर दैट द नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल इज z. सो फॉर z एटम्स मास विल बी इक्वल टू, दैट इज m टाइम्स z. m mass of one atom है, z is the number of atoms, so total mass will be equal to m into z. Or we can write mass of unit cell will be equal to, mass of unit cell will be equal to, that is m into z, which is equal to m divided by n naught into z. Where? Because जो mass है, mass of atom जो है, that is equal to atomic mass, or you can take molar mass depending upon आपका particle क्या है, divided by Avogadro's number. So n naught is the Avogadro's number, m is the atomic mass for atoms. अगर क्रिस्टल में आयन्स होंगे तो फार्मूला मास आ जाएगा, अगर क्रिस्टल में आपका मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा या मोलर मास आएगा. So we can put the value, we put the, instead of we write m, so we have capital M by n naught. Capital M is actually the molar mass for molecules, formula mass for ions, and atomic mass for atoms depending upon particles. उसमें क्या होंगे, चाहे atoms होंगे या ions होंगे या molecules होंगे in that crystal. So mass of unit cell came out to be m by n naught into z, and volume already we find that was equal to A cube. Now put the value of these two in this equation first, we will get the density of that unit cell. So therefore from equation first, D will be equal to, means density will be equal to, so that was mass is equal to m n naught into z, m z divided by n naught, और डिवाइड करना है इसको वॉल्यूम, दैट्स इक्वल टू A cube, that came out to be A cube. This is how we can find the density of a unit cell. This is the required expression.
this is the required expression for finding density of a unit cell. This is the required expression. Now what is D? D is the density. What is M? Now we can write here, M is basically here atomic mass or formula mass, or it is the molar or molecular mass. And next, Z is the number of particles. Z is the number of particles, and we have here A. A is the edge length. Edge length, and this edge length, if this is in centimeters, so we have the expression, so we can convert it accordingly in picometers, in centimeters, in meters, and you know it very well that 1 picometer is equal to 10 raised power minus 10 centimeter, that is equal to 10 to power minus 12 meter. So depending upon what the examiner is asking you to calculate density in, whether in picometers or edge length in, whether in picometers, so you can use directly on centimeters or meters, you can convert the values accordingly. So and N naught is here the Avogadro's number, and you know its value, it's 6.023 into 10 to power 23 particles. So this is how you can find the density of a cubic unit cell by using this expression. Now let's take some examples. So अगर इसमें कितने variables हैं, N naught is not a variable, but M is again not a variable. So we can have 1, 2, 3. If any one among the three is, if two, अगर इसमें आपके पास 2 available है, 2 दिए हुए हैं, तो आप 3 जो है तीसरा वाला calculate कर सकते हैं. So you can easily find the value of any of the 3 if 2 are given. Now let's take some examples. So हम एक क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज एन एलिमेंट. आपके पास एक एलिमेंट है, उसका मोलर मास कितना है? That is 2.7 into 10 to power minus 2 किलोग्राम पर मोल. एज लेंथ आपका दिया हुआ है A, that is 405 पिकोमीटर्स. आपको निकालना है, एंड डेंसिटी भी दी हुई है, that is equal to 2.7 into 10 to power 3 kilograms. It is 3 here kilograms per meter cube. Find the nature of cubic यूनिट सेल. मतलब आपको ये बताना है कि आपकी यूनिट सेल क्या है, whether that is BCC, FCC or simple cubic. So you have to calculate whether the lattice is, whether the unit cell is simple cubic, BCC or FCC. ये आपको नेचर बताना है. तो कैसे निकालेंगे आप? आपको पता है the expression for density is, so density बराबर होती है M Z डिवाइड बाय n नॉट इंटू a क्यूब, जो अभी मैंने बताई यहाँ आपको, m z by n नॉट इंटू a क्यूब. So m is the atomic mass or molar mass that is given, a is given, that's 405, density is given. So you can calculate z. Z is the number of atoms. When z you calculate, अगर number of particles जब आप निकालेंगे तो आपको इजीली पता लग सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, बिकॉज सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस इन प्रीवियस वीडियो हुज लिंक हैज बीन प्लेस्ड इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो देख सकते हैं. तो आपका जो है नेचर निकालने के लिए z निकालना जरूरी है. सो व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन फाइंड द z इज इक्वल टू, दैट इज d into n naught into a cube divided by m. So once you find z, you can find the nature of unit cell. Ab put the values here, all values are given, so you can put the value. So z will be equal to, d के बदले आप लिख सकते हैं 2.7 into 10 to power 3. So 2.7 into 10 to power 3 multiply n naught, Avogadro's number,
that is 6.023 into 10 to power 23 multiply A is basically edge length that is 405 picometers. अब आपको पता ही है कि it is given in meters, यहाँ पे भी meters किलोग्राम दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो you will convert this also in meters. So 405 हम लिखेंगे यहाँ 405 into 10 to power minus 12 whole cube. Because picometer को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए I gave you 1 picometer is equal to 10 to power minus 12 meter. So this is how you can find it in meters. Divide by molar mass करना है, that is 2.7 into 10 to power minus 2. So divided by 2.7 into 10 to power minus 2. So you put the values here. Now you can find Z have been found to be equal to 4. जब आप ये solve करेंगे तो that is equal to FCC or CCP unit cell. This is how you can find the nature of a unit cell or cubic crystal once the data is given. क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे यहाँ. क्वेश्चन नंबर 2 that is आपके पास एक सिल्वर क्रिस्टल है. यू हैव ए सिल्वर क्रिस्टल. इसकी आपको एज लेंथ दी हुई है, द ए इक्वल टू दैट इज 4.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. आपका डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आपको बताना है फाइंड एटॉमिक मास. और आपको पता है सिल्वर क्रिस्टल जो है इट इज इन FCC, ये भी दिया हुआ है. मतलब ये कि आपका सिल्वर क्रिस्टल जो है वो FCC लैटिस में है और उसकी एज लेंथ इतनी है, डेंसिटी इतनी है, आपको एटॉमिक मास निकालना है. सो यू नो द एक्सप्रेशन इज D is equal to mz divided by n naught into a cube. अब देखिए एटॉमिक मास आपको निकालना है m, तो Z is given because FCC क्रिस्टल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होंगे, तो it is 4. This is given, edge length is given, density is given. You can find the atomic mass easily. So we can write like this: m will be equal to density into n naught into a cube divided by Z. So put the value here. This implies m will be equal to density के बदले आप लिखेंगे 10.5 multiply n naught is 6.023 into 10 to power 23 multiply A is basically edge length, that's also given in centimeters, मतलब 4.07 into 10 to power minus 8 whole divided by करना है इसको Z, that is 4. तो m will be equal to, जब आप सॉल्व करेंगे तो m is equal to 106.6. This is the atomic mass of silver. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आपके पास नायोबियम है. नायोबियम जो है, नायोबियम इज हैविंग BCC लैटिस, तो डेंसिटी इसकी दी हुई है दैट इज इक्वल टू 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और आपको जो है आपको बोला जा रहा है फाइंड atomic radius. Find atomic radius. आपको atomic radius निकालना है if its atomic mass is equal to 93U. तो atomic mass आपका दिया हुआ है, आपका atomic radius निकालना है और D दिया हुआ है, BCC lattice दिया हुआ है. आपको पता है density is equal to m into Z divided by n naught into a cube. So you know it very well that relation between R and A is equal to root 3 by 4 into A. ये हमने already calculate किया है. You can watch this video whose link has been placed in the description. So A जब आप निकालेंगे तो you can find the value of R means atomic radius. So you have to find the A. So you can change this expression as, so A cube will be equal to m into Z divided by n naught into D. So A cube will be equal to, put the value, m is the atomic mass that is 93, number of particles is equal to 2 because it is BCC lattice, divided by n naught 6.023 into 10 to power 23 multiply D. D is basically density, that's 8.55. ये जब आप सॉल्व करेंगे और उसका क्यूब रूट B निकालेंगे तो what you will get is you will find the value of A cube that is equal to
you will find the value of a cube. Once you find the value of a, you can then find, जब आप ये सॉल्व करेंगे, you will find the value of a. Suppose it comes out to be x. So once you put the value here, this implies a cube will be equal to x. So a will be equal to cube root of x. तो जब आप इसका वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो r will be equal to root 3 by 4 into a, that is root 3 by 4 into cube root of x. ये आपने निकाला होगा तो you will find the value of atomic radius. इस तरीके से जो है आप atomic radius निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे. एक एलिमेंट है आपके पास, you have an element that's having BCC lattice, BCC structure. तो उसका एज लेंथ जो है दैट इज गिवन, दैट इज 288 पिकोमीटर्स, और उसकी डेंसिटी जो है दैट इज गिवन 7.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट. आपको बोला गया है कि आपके पास 208 ग्राम्स एलिमेंट के हैं, उसमें कितने यूनिट सेल्स होंगे. तो आपका एटॉमिक मास बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो यू कैन नॉट यूज दिस एक्सप्रेशन. सो जो एक्सप्रेशन आपके पास है दैट इज d इज इक्वल टू mz डिवाइड बाय n नॉट इंटू a क्यूब. तो नंबर ऑफ एटम्स जब आप निकालते तो आपको इजीली निकलता ये यूनिट सेल कितने हैं, बिकॉज एक यूनिट सेल अगर सिंपल होगी तो 2 एटम होंगे वगैरह वगैरह. लेकिन आपके पास एटॉमिक मास दिया है, यू कैन नॉट यूज दिस एक्सप्रेशन. सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज बाय मीन्स ऑफ अ वे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, अगर आपको एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना है दैट इज मास बाय वॉल्यूम. सो मास ऑफ एलिमेंट इज 208 डिवाइड बाय वॉल्यूम. Mass of volume of element will be equal to mass by density, because density is equal to mass by volume. तो volume will be equal to mass by density. तो element का जो volume है that will be equal to mass divided by density. Density is 7.29. That came out to be 28.88 gram centimeter cube. This is centimeter cube. This is the volume of element. अब volume of unit cell भी आप निकाल सकते हैं, that is equal to a cube, because unit cell जो है वो cubic है, that's equal to a cube. a तो दिया हुआ है that is 288, मल्टीप्लाई कीजिए आप ये सेंटीमीटर में, means 10 to -10 whole cube. तो ये निकलेगा बराबर that is 2.39 into 10 to power -23 centimeter cube. This is the volume of unit cell and this is the volume of element. अब एक एलिमेंट में कितने यूनिट सेल्स होंगे वो कैसे निकालेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो निकलेगा आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. आपको निकलेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. सो एक यूनिट सेल ये है तो एलिमेंट का वॉल्यूम इतना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. सो therefore number of unit cells will be equal to, that is volume of element divided by volume of unit cell, that is equal to element का volume कितना है 28.88 डिवाइड by it is 2.39 into अभी निकाला 10 to power -23. जब आप ये सॉल्व करेंगे you will get a value that is 12.08 into 10 to power 23 unit cells. इस तरीके से जो है आप यूनिट सेल्स निकाल सकते हैं. अब अगर आप नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स आल्सो, तो यू नो दैट इट इज बीसीसी. तो एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई 2 करना है. सो यू कैन आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स आल्सो. सो दिस इज हाउ you can use the density expression to find various things. You can find the edge length. From that edge length you can find the radius of an atom.
You can find the density directly using these values. You can find the atomic mass of an element. You can find the number of particles. And all these things you can easily determine once you know this expression. I hope you understand it. If you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. I'll come up with more such videos. Till then, take care and thank you very much.